Right. So today's paper is November 24, variant number 43. I've told you variants are important for us because उसमें कुछ resembling questions कभी कभार आ जाते हैं, so it's a good idea to practice them. बाकी though, the point of doing these is just to get an idea that how we're supposed to basically write our answers, how we're supposed to read our uh, questions and case studies and how we should structure our answers. That's the primary goal of these classes. ठीक है, so mostly just focus on the structure that we're dealing with. ठीक है. Content, so obviously you are expected to know, right? So let's go over this. All right. So basically, the question that came, this is a micro question. The way the heading is the threat from large firms. अब हमने large firms का तो context पढ़ा है. Oligopolies के अंदर we've seen because oligopolies have few dominant firms. तो उस basis के ऊपर let's say what they're talking about. कहते हैं the threat from large firms. In 2021, one of the largest United States technology companies' average sale was about 1.2 billion a day. It took less than 4 hours for them to earn about 52,000. The American yearly salary, this is basically more than the yearly salary of a worker. Three of the largest companies recorded break sales and profits. Five of the largest companies' combined profits are over 68 billion. So, sort of like giving us a hint of an oligopoly situation in the IT sector. And then they're saying that COVID-19 की वजह से due to the pandemic and people moving towards online working and shopping, so that just, worked really in favor of these companies, right? Because people were happy to stay at home and work and shop online, you know. They might be forced, they might be happy with that, but that is what the idea is. Critics, however, worry that if this trend to large firms continue, the future will be controlled by a handful of super rich, super powerful companies. You have those techno feudals now, and they will dominate economic activity. This is not just bad for the economy, it is bad for consumers and bad for competition. Also, economic concentration causes unacceptable inequality. One powerful firm tried to prevent workers joining a trade union. Now, these are mostly like just statements, assertions, and there is no, they're not suggesting any economic theory behind it, but I think we have done enough to argue on both sides that how monopolies can, at one side, exploit the labor, and on the other side, they can actually benefit also, right? So we need to know that argument. Then they say that there is like huge cash reserves, means that they could undercut possible new entrants and prevent competition. ठीक है, so new entrants जो market में आ सकते हैं उनको, because they have huge reserves, that means safety money, so they can literally compete them out by doing some sort of pricing in which they might even make a loss or something. Investors will be wary of investing in possible competitor, and new owners would be prepared to sell out to the dominant firms rather than try to compete. There are two things that they're talking about here. एक, तो जो existing firms है वो बेच के market से निकलना चाह रही हैं because dominant firms के सामने वो नहीं खड़ा होना चाह रहे. और दूसरे सिनेरियो के अंदर दे सेइंग कि जो नया आने भी इंटरेस्टेड है, उसके इन्वेस्टर्स आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन इवन इन्वेस्टिंग. देयर टू डिफरेंट आइडियाज हियर. ठीक है. The size of the firm gives it political power to fight an official or government intervention.
Governments are beginning to be aware of this. The chair of the US body that deals with competition law said that there is a range of potential risks created by these large companies. The government is aware of their ability to avoid paying taxes, and their ability to dominate allows them to expand into markets for similar products, right? So they're just building a case. 10 years ago, a co-founder of one of these large firms said, Joseph Schumpeter, the economist, I think um, he was one of the big company, the big university ka professor, I think Harvard maybe, or Stanford, one of these. So who used the term creative destruction would be proud. But now that co-founder is not so sure, we went from being pirates to being the Navy. People may love pirates when they are young and small, but nobody likes a Navy that acts like a pirate. So today's technology giants are just like that. They've become so big that now they are sort of running the rule book, right? And they're just acting like pirates, meaning कि अपनी मर्जी से रूल बुक्स को चेंज करते हैं और उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज करते हैं like a pirate, right? It just sounds like the whole thing sounds like a lot of like oligopoly sort of a situation. So let's see क्या बात करते हैं ये लोग. So we have a set of questions. They will come up to 20 marks. There are three parts over here. पार्ट ए के अंदर इन्होंने एक बात की है कि डिस्टिंग्विश बिटवीन लिमिट प्राइसिंग एंड प्रेडेटरी प्राइसिंग. ठीक है. अब लिमिट प्राइसिंग की जब हम बात करते हैं और प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात करते हैं तो व्हेन वी वर डूइंग दिस इन थ्योरी आल्सो वी वेरी स्पेसिफिकली मेंशन्ड कि अंडर व्हाट सिनेरियो यू वुड बी डूइंग लिमिट प्राइसिंग एंड अंडर व्हाट सिनेरियो यू वुड बी डूइंग प्रेडेटरी प्राइसिंग. So you have to explain it for 4 marks. So you have like 2 marks each, right? So that means तुमको कोई दो statements इनके बारे में कोई factual statements you have to suggest. तो इफ यू रिमेंबर जब हमने लिमिट प्राइसिंग की बात की थी तो वी सेड लिमिट प्राइसिंग क्या होती है जब एक बिजनेस decides to lower their price to such a level कि वो almost अपनी एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाते हैं या स्लाइटली अबव एवरेज कॉस्ट होते हैं. मतलब दे माइट बी मेकिंग अ नॉर्मल प्रॉफिट or a very little abnormal profit, that if the competition sees that price, they feel, okay, you know what, if we enter this market, the prices will fall, and then we're not going to be able to compete in this market. So let's just not enter this market. Ye limit pricing hai. That your price goes so low that competition is just, not interested to enter that market anymore. Done ho gaya. Predatory pricing, in contrast, is slightly different. Predatory pricing के अंदर क्या होता है कि you exist, somebody else exists, and now you want to compete that somebody else out of the market. Okay, it's not a new entrant that you want to discourage. It is an existing firm that is there in the market, and you want to drive them out of the market. ठीक हो गया. इसके अंदर you might go into the pricing where you might be making losses. ठीक है. Obviously, in some economies that might be illegal because ये anti-competitive behaviors के ऊपर है. So we just want two sentences which just clarify this argument here. ठीक है. So their acceptable answers, let me show you. लिखते हैं that limit pricing is used by existing suppliers, right? Existing supplier to restrict entry of new entrants. कैसे? By setting a price low enough, ठीक है? So by setting the price low enough that any other new entrant feels that it is not worthwhile for them to enter the market, right? So ये बात यहाँ पर इन्होंने की हुई है. So that's that for this. ठीक है. फिर प्रेडेटरी प्राइसिंग की बात आ जाती है तो उसके अंदर वन सप्लायर फोर्सेस अनदर सप्लायर ऑलरेडी in the market to leave the market.
They set the price even like below cost in the short run to drive out the competition, but there might be problems. So any two statements perfectly fine, कोई मसला नहीं है. ठीक है, so over here they don't want you to make any reference to the case. They just want the meanings for it. That's what distinguish mean. अब जब हम इसके पार्ट बी के ऊपर आते हैं, पार्ट बी को जरा क्लोजली देखो. पार्ट बी के अंदर हम क्या कह रहे हैं कि explain whether there is any evidence in the article that these two types of pricing policy, if there is any evidence of these types of pricing policy. So this case was given to a set of students अभी mock के अंदर, and for this question majority of the kids did it wrong. What they did was, क्योंकि एविडेंस मांगा है आर्टिकल के अंदर, तो व्हाट द किड्स डिड वाज कि उन्होंने कहा भाई ये जो सेंटेंस लिखा है ना, दैट देयर आर ह्यूज रिजर्व्स, दैट मींस दैट दे कुड undercut the possible new entrants and prevent competition. So this is what they wrote. ठीक है. uh, but the issue here is ये कौन से को लिंक कर रहा है, ये लिमिट प्राइस को कर रहा है या प्रेडेटरी को कर रहा है. So because it says कि possible new entrant and prevents competition because of the huge reserves, मेरी नजर में तो ये लाइन से बेहतर उसके बाद वाली लाइन है. Investors will be wary of investing in possible competitors and new owners. ये मेरी नजर के अंदर जो है ये लिमिट प्राइसिंग की स्टेटमेंट है. ऑलराइट, कि आप नए कंपटीशन को जो है मार्केट के अंदर घुसने से पहले दिस इज हाउ यू आर टारगेटिंग. या तो अगर तुम लिखते हो तो दोनों को कर लो, पूरी स्टेटमेंट ही लिख लो और इसको कनेक्ट कर दो कि ये लिमिट प्राइसिंग से कनेक्टेड है. फिर उसके बाद एंड वुड बी प्रिपेयर टू सेल आउट टू द डोमिनेंट फर्म्स, दैट मीन्स एग्जिस्टिंग फर्म्स वुड बी सेलिंग आउट एंड दे विल ट्राई टू लीव द मार्केट. तो मेरी नजर के अंदर ये जो दूसरी लाइन है वेयर दी एग्जिस्टिंग फर्म्स ही हो सकती हैं ऑब्वियसली, जो अपने आप को सेल आउट कर देंगी रादर देन ट्राई टू compete, बिकॉज एग्जिस्टिंग फर्म ही सेल आउट कर सकती है ना, न्यू फर्म तो अपने आप को सेल आउट नहीं कर सकती है. तो दिस वन सीम्स लाइक मोर ऑन द predatory. Okay. तो आई थिंक दिस इज हाउ यू वुड मेक द डिस्टिंक्शन. दोनों दो मार्क के लिए दोनों का बारे में एक एक पॉइंट लिखना जरूरी है. तो लिमिट प्राइसिंग, यस, इन्वेस्टर्स नॉट prepared to invest in new companies. Potential owners, potential word लिखा हुआ है, potential owners are prepared to sell to existing large firms. ये भी acceptable है for limit pricing. And new firms might choose to leave the industry. Yeah, new owners might leave the industry, and this might be described as predatory. That means an existing would leave the market. Must explain both types from the article to gain 2 marks. Otherwise, एक mark मिलेगा limit के लिए, right? You won't get a mark for writing this statement that they have huge reserves, which means that they can undercut possible new entrants. That will not be counted. ठीक है. फिर उसके बाद assess 3 possible positive effect on the macro economy. ये तो आसान सा सवाल आ गया. Macro economy of the huge increase in the size of the 5 largest technology companies. Macroeconomic objectives की बात कर रहे हैं. You know the objective. तो आपने एक इकोनॉमिक ग्रोथ की बात कर ली. ठीक है, वो किस तरीके से, जब फर्म बड़ी होंगी, ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस करेंगी, ज्यादा स्केल पे काम करेंगी, जीडीपी बढ़ेगा. फिर यू कैन टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो गिर जाएगी, बिकॉज जब ये फर्म्स अपने आप को एक्सपैंड करेंगे तो ऑब्वियसली लोग उसकी वजह से हायर होंगे, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी. फिर उसके अलावा मैक्रो के अंदर आप
वी कैन टॉक अबाउट बैलेंस ऑफ पेमेंट कि ये कंपनीज जब बड़ी होंगी ये इंटरनेशनल मार्केट्स में काम करेंगी तो उसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा. I can even simply talk about aggregate demand is going to rise because of these companies getting larger. आपका जो current account है उसके अंदर you can expect surpluses because of the rising exports done by these firms. उसके अलावा और क्या suggest कर रहे हैं लोग? Let me see. So increase in employment, increase in aggregate demand, increase in economic growth. All right, so possible increase in economic development क्योंकि जब आईटी सेक्टर बड़ा होगा तो ऑब्वियसली वो लोग इंफ्रास्ट्रक्चर लगाएंगे, इंटरनेट का एक्सेस देंगे, लोगों को ट्रेन करेंगे. There's a lot of things that they can do, and then this all of this it can have a multiplier effect on the economy कि सिर्फ आईटी नहीं चलेगी. फिर आईटी की जब फैक्ट्रीज लगेंगी तो उसके साइड में स्टील सीमेंट भी चलेगा because of the factories and expansions. So that would be a good thing. Dynamic efficiency sounds more like a micro concept, just like productive and allocative efficiency. So efficiency is more of a micro element. So मेरी नजर के अंदर it should not be part of this discussion. Like नीचे लिखा भी है, must access effect on the macro economy and not the micro. So efficiency for me is a micro concept. ठीक हो गया. So obviously you're explaining this then also. फिर उसके बाद तो बड़ा easy 6 marks they were willing to give you. Make sure that you write this properly. Uh, is price war जैसे ऊपर predatory pricing का एक आया है तो उसके हिसाब से there's a question so I'm just answering that is price war, would price war come under predatory pricing? No, I think there are different viewpoints on it. Price war, in my opinion, is that when the two big companies fight for market shares and they both know that neither of the two firms is going to exit the market. You can't eat it away. Predatory is that you want to kill the other market, other company, right? So price war के अंदर the other company is not going anywhere. सिर्फ market shares जो है, like for example, Coke and Pepsi may go into a price war. They can't go into predatory pricing. However, these two companies can go into predatory pricing against the smaller firms जो नई कोला इंडस्ट्री के अंदर जो नए कंपनीज आई हैं. Right? So that would be so end result जो है, it's not about just competing, but it's about eliminating the competition. When you have price war happens between the big companies. Anyhow, the article says the growth of large firms is bad for consumers, bad for competition, and causes inequality. So, in my answer, I want to make sure that I address all of these things, right? For my answer, I don't want to leave any of these things out. So, article says that the growth of firms is bad for consumers. So, what I want to do is I want to see in the article that if there is something like this, अच्छा नहीं, sorry, नीचे question बाकी है. Consider whether this statement can be supported by the article and by economic theory. Oh, so there's a lot of work that needs to be done. So इसका mark बड़ा strategically तुमको मिलेगा that you want to make sure that you answer everything. पहली बात करते हैं, ठीक है? Um, it's bad for consumers, bad for competition, bad for efficiency. So let's do like a supporting view that it is bad. Okay? तो सपोर्ट के अंदर आर्टिकल के अंदर काफी सारी बातें की गई हैं. इफ यू गो अप, वी वांट टू पिक वर्ड टू वर्ड फ्रॉम अप हियर. एक चीज जो मैं पिक करूंगा वो ये है कि देव सेड समथिंग अबाउट सैलरीज, दैट कैसे these companies are making so much more salaries compared to individuals. फिर उसके बाद इन्होंने एक और बात की, something about, where is it? They said something about joining. Yeah, prevents them from joining
this. ठीक है? And then they have they talked about anything else? Uh, this one is not an evidence. I don't think this is an evidence that also economic concentration causes unacceptable inequality. This is like a theoretical idea. This is not one of the evidences which I can use to say, okay, हाँ जी ये. All right, there's more. There is avoid paying taxes and ठीक है. And they will allow to dominate them in expanded markets. मेरे ख्याल के अंदर ये बहुत सारे हैं. You don't have to write all of them, but I feel ये एक बात हो गई. ये सपोर्ट हो गया ऑफ फॉर द क्वेश्चन. ठीक है, तो ये हमारे सपोर्ट हो गए. सपोर्ट के बाद आपने क्या करना है? बेसिक अपनी थ्योरी के हिसाब से फिर बताना है कि क्या इकोनॉमिक थ्योरी अग्रीज विद दिस. तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कि जब फर्म व्हेन size is bigger for these firms, I'm just trying to do notes, they may lead to fewer choices, right? They may charge high prices, ठीक है? And they can make a lot of high profits. ये तो आर्टिकल में भी लिखा हुआ है. तो खास तौर पे इन द केस ऑफ लाइक मोनोपलीज की सिचुएशन वेयर वी सी कि जब फर्म्स मोनोपली बन जाती हैं तो वो स्मॉल फर्म्स को compete आउट कर देती हैं, राइट? सो सिंस लोकल फर्म्स एंड न्यू फर्म्स मे नॉट एंटर तो उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है. आई अग्री. Then they also say political power to fight. That would be your supporting argument that that would be bad. Okay, जी. फिर क्या करना है? Then you want to talk about some against argument. तो against argument के अंदर then you want to do the support for the against argument. जब हम अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर जाते हैं तो वी सी सम जिसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट मतलब कि नहीं यार दे विल एक्चुअली बेनिफिट एवरीबडी. तो आर्टिकल के अंदर ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज समथिंग और द अदर दैट दे हैव मेंशन्ड. तो इस वाले के अंदर वी सी दैट इज दैट people are staying at home and working and they're shopping online. So, the ability to work and shop online was greatly welcomed by many, राइट, हु वाज फोर्स्ड टू स्टे एट होम. तो ये मेरी नजर के अंदर जो है ये एक फॉर आर्ग्यूमेंट है. एनी अदर फॉर आर्ग्यूमेंट? they haven't talked about any of the prices. The rest is mostly to do with the negative aspects of it. I don't think there's any other. तो एटलीस्ट एक है तो मैं उसको कहूंगा. और फिर मैं अपनी इकोनॉमिक थ्योरी की बात कर सकता हूँ. हमने इकोनॉमिक थ्योरी के अंदर क्या पढ़ा है? थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा, देखें जी, जब फर्म्स बड़ी हो जाती हैं साइज के अंदर तो देन व्हाट दे बेसिकली डू इज इनको कुछ एडवांटेजेस हो जाते हैं. एडवांटेज लाइक इकोनॉमीज ऑफ स्केल विच कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लोअर प्राइसेस बिकॉज ऑफ द फॉलिंग एवरेज कॉस्ट, राइट? तो दैट कैन बी अ बेनिफिशियल थिंग. फिर हमने ये भी चीज पढ़ी थी कि मोनोपलीज जब एबनॉर्मल प्रॉफिट्स करते हैं तो वो क्या करेंगे? फिर वो रिसर्च R&D के अंदर पैसे स्पेंड करेंगे. दे गोना कम आउट विद न्यू इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बिकॉज वो फिर फीजिबल हो जाता है एंड ऑल ऑफ दैट. So that would be my pro argument. And then obviously we need to consider likha hua hai, consider whether this statement can be supported. So then we want to have our final conclusion. मेरी नजर में the conclusion is very clear that that this statement is not always true, right? Because economic theory and even the article has an against argument for these statements. But I see that there is, at least in the article, there is much supporting views towards the supporting argument that yes, it's bad for consumers and bad for competition, but this is not all the truth, right? So article के अंदर कुछ information can be missing also. तो ये इस तरीके से you want an answer for this.
you do a two-sided argument. But इसके अंदर क्या था? Support theory, final conclusion. That's how you go about this particular question. फिर उसके बाद ऐसे में आते हैं सेक्शन बी के अंदर. ऑब्वियसली यू हैव टू माइक्रो के एसेज दैट यू हैव टू डू. वन ऑफ देम यू हैव टू डू. This question is about externalities. I think if you have gone through my lectures on externality, it's a very comprehensive lecture on this and the labor market, where I have used a lot of questions to answer. Probably what we're going to discuss right now has already been discussed over there. तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि बस अब उसकी थ्योरी अब तुमको याद हो जानी चाहिए. एंड आई फील दिस इज वन ऑफ दोज क्वेश्चन. लिखते हैं, बल्कि इनफैक्ट पूछ रहे हैं तुमसे, दैट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज ऑफ प्रोडक्शन, they've already mentioned कि ये ऑफ प्रोडक्शन है, causes market failure. Heavy words, right? Almost like five heavy words over here. Negative externalities of production causes market failure. So with the help of a diagram लिखा है, that doesn't mean कि एक ही के ऊपर तुम good enough happy हो जाओ. Assess the extent to which the introduction of indirect taxes is likely to address the causes of market failure. So the question is really about correction policies. So make sure that for full level 3 answer, your question needs to be discussing indirect taxes, how it affects market failure, and an alternative policy, because extent to which introduction is likely to address the problem. Evaluation ke andar you might want to consider this. Now, because this is our second paper and there are a few new people over here, so let me just go over this idea one more time. Your answer is broken down into 14 and 6 marks. AO1 knowledge and understanding and AO2 इसके अंदर जाएगा. Knowledge and understanding and analysis, that means जो आर्टिकल के अंदर बात की हुई है मुझे उसको राइट अप करना है और प्रूफ करना है. फिर उसके बाद इवैल्यूएशन के अंदर आई एम रिक्वायर्ड टू मेक ए काउंटर आर्ग्यूमेंट दैट वेदर इट विल रिड्यूस market failure or not. That's an evaluation. Answers are basically in levels. You have a level 1, which gives you 1 to 5, level 2, which gives you 6 to 10, and level 3, which gives you 11 to 14. And then evaluation is level 1 and level 2, where you can get 1 to 3 marks and then 4 to 6 marks. I'll show you a completely extensive version of this, but how do you answer this? देखें जी, जब आप market failure को address करते हैं, there are certain set of lines that you have to talk about. Market failure happens when the demand and the supply curves don't meet, या at least जो allocation of resources है, allocative efficiency is not being achieved. In markets where you are factoring in externalities, the social optimum level is where the marginal social benefit is equals to marginal social cost. Whereas market economy के अंदर, it is where marginal private benefit या फिर simply कह लो the demand curve or the average revenue curve is equals to the marginal cost. Right? Demand equals to supply in another words. एक्सटर्नैलिटीज क्या होती हैं? एक्सटर्नैलिटीज को आप एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग द वर्ड स्पिल ओवर. ये मार्किंग स्कीम में यूज होता है. दिस इज अ थर्ड पार्टी इफेक्ट. When it says negative, obviously it has to do with some harm that it is doing to the third party. And here our discussion is more in terms of the production की point of view से. जब आप कुछ certain goods produce करते हैं तो उसकी वजह से कुछ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट आता है इकोनॉमी के अंदर.
और उसकी वजह से obviously we're talking about that how there is an over allocation of resources and there is an overproduction of these goods. So pehla half of my question is all about that and addressing it. So I have a sample answer. If you just bear with me, let's work with this sample answer for a minute. It's a very extensive one. I have proofread it. It's a good stuff, right? So if you can at least just level pe, I'll just highlight few important words which I would love to see in an essay. Okay, so let's go over. Market failure arises when resources are not allocated efficiently, leading to a loss of economic welfare. Allocative efficiency is achieved where the marginal social cost of production equals the marginal social benefit, which in a free market is when price is equal to marginal cost. असल में सारा झगड़ा यही है. फ्री मार्केट एक्सटर्नैलिटीज को इग्नोर करती है, तो वो डिमांड एंड सप्लाई को देखती है, राइट, यू नो दिस. लेकिन जब आप वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, पूरी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटर्नैलिटीज को फैक्टर इन करते हैं, तो दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन एंड देन यू हैव टू सी फ्रॉम द सोशल बेनिफिट एंड सोशल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से. However, then they say, however, when negative externalities of production are present, the true cost, I love this word, the true cost to society exceeds the private cost. What are they saying? That the social cost is greater than the private cost. Why? Because there is an external cost which is greater than zero, right? There's a positive external cost. Okay, G. This divergence between private and social cost results in market failure as the market produces more than the socially optimum level of output. हाँ, externalities को अच्छा नहीं समझाया अभी तक. Okay, all right, let's see. A common example is pollution. We want to work with an example. ठीक है जी. फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो जब भी आप प्रोडक्शन करते हैं, इट फैक्ट्रीज इमिट पोल्यूटेंट्स, उससे एनवायरमेंटल इश्यूज होते हैं एंड यू हैव अ नेगेटिव स्पिल ओवर इफेक्ट ऑन द थर्ड पार्टीज, right, on the third party, and they suffer as a result of that. And so the marginal private benefit, sorry, marginal private cost is lower than the marginal social cost, and where this exceeds. तो डायग्राम मैं बनाता हूं. bear with me with the diagram. डायग्राम इसका क्या बनेगा? सबसे पहले, ऑनेस्टली मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि हम डायग्राम्स को इतना इग्नोर करते हैं, डायग्राम के एक्सिस को इतना ग्रांटेड लेते हैं कि वी डोंट समटाइम्स नो कि हमने लिखना क्या है उधर. तो वी वांट टू राइट, बिकॉज मैं कॉस्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूं, तो वी आई विल राइट कॉस्ट एंड बेनिफिट विल गो ऑन द वाई एक्सिस. marginal social benefit comes like this, marginal private benefit, लेकिन क्योंकि मैं ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहा हूं, तो आई विल अस्यूम दीज टू थिंग्स आर द सेम, देयर इज नो एक्सटर्नल बेनिफिट. एंड देन आई विल डू दिस वेयर आई विल राइट ये मार्जिनल प्राइवेट कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस, and this is where private benefit and private costs meet. So ये SM की quantity is what the markets are producing, and PM is the price. ये मैंने नीचे explanation दी हुई है इस diagram की. So this is what the diagram is. लेकिन because we know that there is an external effect, so जो marginal social cost है, that is a little on the higher side. Marginal social cost will be drawn like this because आप production के point of view से कर रहे हैं. तो दैट शोज कि सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट की वजह से, इंटरसेक्शन की वजह से, द एक्चुअल क्वांटिटी दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड इज दिस. ये आपका सोशल वेलफेयर क्वांटिटी है. एंड दिस शोज दैट हाउ देयर इज an over allocation or an over production that is taking place. You understand? तो ये आपका डायग्राम है. इसमें मार्केट फेलियर किधर है भाई? मार्केट फेलियर है ये क्यू एम, ओ सॉरी, नो माय बैड, क्यू एम के ऊपर आप देखेंगे कि सोशल कॉस्ट किधर है और प्राइवेट कॉस्ट किधर है.
ये आपका मार्जिनल एक्सटर्नल कॉस्ट है बेसिकली, एंड यू नीड टू रिड्यूस द क्वांटिटी until this becomes equal and you reach your social optimum level. तो ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये आपका मार्केट का फेलियर या डेड वेट लॉस भी कह सकते हो आप, या लॉस टू सोसाइटी भी कह सकते हो. तो दिस विल बी द डायग्राम दैट यू गोइंग टू मेक. नीचे मैंने इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी है. But you don't want to spend too much time doing this. This should be like your front page, three quarters of a page, or maximum a page, right? The real question is about टैक्स लगने की वजह से क्या इस मसले का हल निकलेगा कि नहीं. तो फिर आप जाते हैं अपने पार्ट पे. That one method to correct this market failure is imposition of indirect tax, such as the carbon tax or pollution tax, which aims to internalize the externalities. Internalize externality का क्या मतलब, कि वो जो सोसाइटी पे नुकसान हो रहा है, let's bear the cost, let the company take or bear that cost, or government forces these companies, you got to take these costs to yourself. So by imposing a tax equal to the marginal external cost, the government intention to shift the marginal private cost curve upwards to coincide with the social cost. This is what it is. अब उन्होंने तो एक डायग्राम बोला है, लेकिन this is how you'll do. You know how private cost, private benefit, social benefit, this is where the market is. This is where it should be. तो वो कह रहे हैं ये जो आपकी एक्सटर्नल कॉस्ट है, अगर हम आप पे ये टैक्स लगा दें, यू रिमेंबर एएस में हमने पढ़ा था वर्टिकल डिस्टेंस रिप्रेजेंट्स द टैक्स रेट. तो अगर हम ये टैक्स रेट लगा दें, तो बेसिकली क्या होगा कि जो आपकी प्राइवेट कॉस्ट का जो कर्व है, वो बेसिकली सोशल कॉस्ट की तरफ मूव कर जाएगा, जब उसके अंदर आप इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे. ठीक है. तो दिस बेसिकली प्राइवेट कॉस्ट will internalize the taxation and will become equals to the social cost. And जब ये situation होगी, तो social benefit and social cost, या social benefit या private benefit and the new private cost with the taxation comes over here. This is where the market will produce, and आपका जो dead weight loss का issue है, that becomes the solution. ठीक है. तो yes, the external cost becomes the part of your marginal private cost. तो ये इस तरीके से आप डायग्राम इसी में भी करके दिखा सकते हो. सेपरेटली भी एक डायग्राम बनाना चाहते हो तो सेपरेटली भी एक डायग्राम बना सकते हो. ठीक है जी. तो ये मैंने शो कर दिया टैक्सेशन, हाउ वुड इट वर्क. फिर हम लिखेंगे द टैक्स इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट, इंसेंटिवाइजिंग फर्म्स टू रिड्यूस देयर आउटपुट और इन्वेस्ट इन क्लीनर प्रोडक्शन मेथड. दोनों आपका मसला सॉल्व करेंगे. दिस चेंज इन बिहेवियर रीअलाइंस द प्राइवेट इंसेंटिव विद सोशल वेलफेयर. लेकिन इसकी जो इफेक्टिवनेस है, दैट डिपेंड्स ऑन द करेक्ट कैलिब्रेशन. व्हाट डू वी मीन बाय दैट? वी रियली नीड टू फर्स्ट फिगर आउट कि आपकी अगर ओवर प्रोडक्शन हो रही है तो वो कितने से हो रही है, और आपके जो आप सोसाइटी पे एक्सटर्नल कॉस्ट प्लेस कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर. हाउ डू यू रिकॉग्नाइज कि जो आपका एक्सटर्नल कॉस्ट है वो इतना है और इससे ज्यादा नहीं है या इससे कम नहीं है? बिकॉज इफ यू गेट इट रॉन्ग, if you don't tax enough, then there will be overproduction. If you tax too much, then there's going to be a very less production, right? So that can create problem for the economy. तो यू वांट टू, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो आपने पॉलिसी रिकमेंड की है. नाउ अब मैं जा रहा हूँ सॉर्ट ऑफ अपने इवैल्यूएशन के अंदर, वेयर आई विल स्टार्ट काउंटरिंग. ठीक है. कि जी टैक्सेशन से जो है वो मार्केट फेलियर का मसला हल नहीं होगा. तो however the extent to which indirect taxes can address market failure depends on several factors. We don't need to write too many. In my opinion, two is enough. First, it is often difficult for government to accurately quantify the external cost of production. That's true. I've just said that, which means that setting the correct level of tax can be challenging. A precise, imprecise tax could fail
to eliminate the externalities or cause unintended side effects such as reduced competition or job losses in if you tax too much, right? तो मेरी ये दो बातें हो गई। फिर टैक्स के बारे में और मेरे पास कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं। दैट सेकंड, द टाइम लैग बिटवीन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टैक्स एंड बिहेवियर, ये वो टाइम लैग की बात हो रही है कि बाय द टाइम यू डिसाइड कितना टैक्स लगाओगे, पार्लियामेंट में अग्री कराओगे, पॉलिसी बनाओगे, इम्प्लीमेंट करोगे, उसका इफेक्ट आएगा, दैट माइट टेक अ लिटिल टू लॉन्ग एंड that might not work in your favor, and especially अगर कोई ये inelastic goods है तो even if you put higher prices it will not reduce consumption, right? So that is again a limitation. Then they're also saying कि what if the firm is so big that it is such a big firm that what they do is they basically bear the taxes, right? And they continue to produce the large scale, sell it at a low price, they bear the burden, and they just go about like that. ठीक। फिर उसके बाद ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, आई थिंक इट्स अ मस्ट दैट यू शुड ऑलवेज मेक अ हैबिट ना, क्योंकि क्वेश्चन वाज नॉट अबाउट के वेदर इनडायरेक्ट टैक्स इज द बेस्ट पॉलिसी, तो फिर वरना तुम एनालिसिस में ऑल्टरनेटिव पॉलिसी भी बताते हैं। ओवर हियर दे जस्ट सेड कि उसकी इफेक्टिवनेस को देख लो, तो फिर यहाँ पे अब काउंटर आर्ग्यूमेंट सच एज ट्रेडेबल pollution permits or direct regulation may in some case offer more precise control over emissions and externalities. So pollution permits cap the total level of pollution and create a market for firms to trade rights to pollute and potentially achieving environmental goals more efficiently. Deregulations थोड़ी सी rigidness create करता है economy के अंदर। Please remember, remember what? Remember the pollution permits, the tradable pollution permits, how do they work? Okay, I have a whole lecture on it. Do take a look at it, and then you can give your final evaluation. कि नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज बेशक होती हैं, बट उसकी इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है सर्टेन चीज़ों के ऊपर, रिस्पॉन्स, मार्केट कंडीशंस। You cannot have like one size fit all policy for everyone, but you can have an alternative approach like the other policies mentioned to specific products, right? Indirect taxes के ऊपर problems different होंगे, and so this is how this question will be answered. मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से मार्क करता अगर मैं होता? Market failure, level 1, I would give up to 3 marks for market failure की explanation with allocative efficiency and the whole idea. फिर उसके बाद एक्सटर्नैलिटीज को भी तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर देते, तो लेवल 1 आई थिंक आई वुड हैव गिवन यू 5 मार्क्स फॉर दैट विद द गुड वर्ड्स लाइक स्पिल ओवर, थर्ड पार्टी इफेक्ट, पोल्यूशन, इन सबको मेंशन करते हुए, बिकॉज दैट विल इंटरनलाइज द डिस्कशन हियर। फिर लेवल 2 के अंदर मेरी नज़र के अंदर आई वुड गिव यू लेवल 2 पार्शियल मार्क्स ये डायग्राम बनाने के और इसको एक्सप्लेन करने के। ठीक है, तो मैं ये इस तरीके से तुमको लेवल 2 का आंसर मिडवे, तकरीबन मिडवे क्लोज टू हायर लेवल 2 आंसर की तरफ ये देता अगर ये बिल्कुल प्रिसाइज होता। बट अच्छा, लेवल 2 से लेवल 3 पे जाने के लिए यू मस्ट टॉक अबाउट द टैक्सेशन। टैक्सेशन के बगैर आप लेवल 3 पे नहीं जा सकते। मार्केट फेलियर की एक्सप्लेनेशन के बगैर आप लेवल 3 पे नहीं जा सकते हो। मार्केट फेलियर के डायग्राम के बगैर तुम मार्केट लेवल 3 पे नहीं जा सकते हो। सब कुछ बहुत अच्छे लिखो लेकिन एक पूरा इनडायरेक्ट टैक्सेस मिसिंग है, मैं तुमको लेवल 2 से ऊपर मार्क नहीं दे सकता। एक्सेप्शनल भी लिख लो तो मैं तुमको 8-9 ही दूंगा, उससे ज्यादा ऊपर नहीं दूंगा, 10 भी नहीं दूंगा, राइट? फिर उसके बाद आप जब काउंटर आर्ग्यूमेंट शुरू करते हैं, अगर आप टैक्सेशन की काउंटर आर्ग्यूमेंट करते हैं कि किस तरह से टैक्सेशन में प्रॉब्लम आएगी, इफ यू गिव मी लाइक 2 to 3 वेल एक्सप्लेन्ड, आई कैन गिव यू अ लेवल 2 अप टू 4। I need an alternative policy for a level 2 in your evaluation, an alternative policy discussed, and then final evaluation के लिए मुझे 6 मार्क पूरे करने के लिए with conclusion is a mandatory requirement. Do you understand how I am saying? Okay, so this is how I would go for this. फिर उसके बाद these essays I am uploading. I think मैंने पहला लेक्चर भी, हमारा परसों वाला लेक्चर, I haven't uploaded on YouTube. I haven't gotten the chance to do it, but that is the intention that I would want to upload these also.
दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है लेबर मार्केट। आई लाइक लेबर मार्केट। इस साल के लिए आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डूइंग लेबर मार्केट। ठीक है, तो लेबर मार्केट के अंदर हम क्या सवाल आ जाता है? बड़ा अच्छा सा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा आसान है। विद सम ऑफ यू आई जस्ट डिस्कस दिस टुडे। Wages in a perfectly competitive labor market will always be higher than wages in a monopsony labor market। बहुत आसान सवाल दिया है। ठीक है जी, तो वो कह रहे हैं परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट के अंदर वेजेस विल ऑलवेज बी ऑन द हायर साइड देन अ मोनोपोली। तो पहले मैंने इस बात को पूरा नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस में एक्सप्लेन करना है, वन साइडेड, दैट यस दे आर ऑलवेज ऑन द हायर साइड देन मोनोपोली, and then I will make a counter argument where I will argue that no, sometimes the wages in a monopsony can actually go up. So just for spoiler alert, it's trade unions and national minimum wage is the one that I'm mostly inclined towards. Okay. So how should I answer this one? Number one, perfectly competitive labor market. I'm willing to give you up to 5 marks for a Zabardast explanation of how wages are set in a perfectly competitive labor market. ठीक हो गया? And along with diagrams, obviously. फिर उसके बाद I want a fantastic answer about monopsony, what they are. I want a diagram for monopsony, and I want you to prove that yes, they pay lower wages and they tend to hire lesser people also. That will give you level 2 का answer monopsony के साथ. Perfect competition level 1 5 marks, with along with monopsony and comparison level 2. Level 2 sometimes I think examiner might even give you level 3, but 11 marks से ऊपर नहीं देगा उसके ऊपर। ठीक है, उसके लिए जाने के लिए what you also need to discuss is other things that can have an impact in the labor market, like the supply and the demand for these types. Now, this is one of those things which a lot of kids would not or would have not written about, कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं और डिमांड को अफेक्ट कर सकते हैं और उसकी वजह से वेज के अंदर डिफरेंशियल क्रिएट हो सकते हैं। So let me suggest an answer again for this one. तो सबसे पहले in labor economics, wages outcomes are determined. मेरा ख्याल, yeah, in a perfectly competitive labor market, I think that would have been a better sentence structure. Wages outcomes are determined by the interaction of demand and supply for labor within a particular. So highlight कर लेता हूँ because I said the things without which your essay is on a bad side. डिमांड एंड सप्लाई की इंटरैक्शंस के ऊपर वेज डिटर्मिनेशन होती है। ठीक है, फिर दे जस्ट डूइंग अ स्टार्टअप ऑफ इट। ओके, चलो दिस इज वेयर इट रियली स्टार्ट। बल्कि ऊपर डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स की आपने बात की, बल्कि नीचे भी बात हो रही है, तो चलो व्हाट्स आर नेसेसिटीज, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट। Many employers, many workers. There is perfect mobility of labor both geographically and occupationally. We have an assumption. Then उसके बाद there is perfect information in the market. ठीक हो गया। फिर उसके बाद firms जो हैं वो wage takers हैं। There are no barriers to entry and exit for the firms क्योंकि वो perfectly competitive markets में work करती हैं। Wages are determined on the market demand for labor, which is equals to MRP and which meets the market supply. In fact, मैं ये बात डायग्राम के साथ भी एक perfectly competitive labor market का डायग्राम भी दे देता हूँ तुमको. So let me make that. So the diagram will be quantity of labor, wages. यहाँ पे आप number of hours के साथ भी काम कर सकते हो because usually it is that's what it is done in. You have the demand for labor, which is the same thing as the MRP for labor. And then you have
the supply for labor. Based on the demand and the supply, this is where a perfectly competitive labor market, this is the number of workers they will hire, and this is the wage that they will offer. ठीक हो गया? तो ये हमारा पहला डायग्राम हो गया इसका. Then they move on. WC और QC लिखा है इन्होंने. ठीक है. Then they move on and they say, in contrast, a monopsony labor market exists when there is a single dominant. जबरदस्त. ये नहीं लिखा ना, कोई सीन नहीं है तुम्हारा फिर. मोनोपसनी की एक्सप्लेनेशन है. और a few employers जरूरी नहीं है, but the idea is that they are the wage setters. Wage setters? Wage makers, wage setters. सही है. Unlike perfect competition, monopsonist का जो supply curve है, it's an upward sloping supply curve, meaning that to hire more workers, it must offer a higher wage. However, because this wage must be paid to all existing workers, the marginal cost lies above the supply curve. Wait, hold on a second. एक second. I might have made a गड़बड़. Perfectly competitive labor market. नहीं ठीक है. फर्म लिखा होता तो मैं क्या करता. मैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस सप्लाई कर्व आई वुड हैव मेड द फ्लैट वन, क्योंकि इंडस्ट्री जब एक सिंगल फर्म को बताती है, ये मैं मार्केट्स की बात कर रहा हूँ, तो फिर ठीक है, मसला नहीं है. तो अब आप आ जाते हैं मोनोप्सनी के डायग्राम के ऊपर. मोनोप्सनी के डायग्राम के लिए फिर मैं एक सेकंड डायग्राम बनाऊंगा. देखो अच्छा है ना कि थोड़े से ज्यादा डायग्राम्स भी बनाओगे, तुम्हारा आंसर भी अच्छा सा दिखेगा, अपीलिंग होगा कि बच्चे ने इतने अच्छे अच्छे डायग्राम्स बनाए, बहुत सारे डायग्राम्स बनाए हैं, उसको एक्सप्लेन भी किया है, तो आपके पास वॉल्यूम भी जनरेट हो जाएगा. ऑल्दो यही काम मैं एक ही डायग्राम में भी कर सकता था, राइट. So this is where the supply of labor is. This is where the demand for labor is, which is the same thing as the MRP for labor. But what a monopsonist does is monopsonist का जो marginal cost है is on the higher side. By the way, you're going to write that. I have done that over here. तो फिर वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि based on this is the amount of people that they hire, QM लिख लेता हूँ for what the monopsony does, right? And the wage they offer is based on the supply curve or the average cost curve. Yeah, by the way, supply curve is the same thing as the average cost curve. And this is where the monopsony produces. But remember, the question is about whether perfect competitive firm always have a higher wage and hires more people, right? I think higher wage than monopsony. तो यहाँ पे मेरे ख्याल है इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट मैं ख्याल नहीं है, आई एम श्योर ऑफ, यहाँ पे तुम कंपैरिजन करोगे ना कि कैसे कंपटीशन के अंदर जो वेज है वो ज्यादा है और मोनोप्सनी कम वेज एज पर द क्वेश्चन. तो इट सॉर्ट ऑफ लाइक प्रूव्स द आइडिया, एंड दैट्स अ नाइस level 2 with all points mentioned. So we're willing to give you like a level 2 for this one. This is the diagram you're going to make. उसकी फिर नीचे हमने एक्सप्लेनेशन भी लिखी है कि किस तरह से वर्कर्स जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमने एक कनेक्शन बनाया है, और ये वाला जो हमने पूरा किया है डायग्राम, this diagram sort of like makes the connection. It answers the question whether monopsony charges lesser wage, right? So from the diagrams, it is evident that ceteris paribus, a monopsonist will pay lower wages and employ fewer workers than a firm in a perfectly competitive market. This occurs due to employers' monopoly power and distortion between the marginal and average cost of hiring. All right. However, now we want to talk about whether this will always be the case. However, the assertion that wages in a competitive labor market will always be higher than in a monopsony requires a deeper evaluation. Uh,
I think what I am missing over here is that the thing that I said about the supply and demand for both these types of labor markets. What are the factors that can have an effect on these things, on the both of these markets? राइट, तो डिमांड के फैक्टर्स मैं तुमको एक रफली से बता देता हूँ। डिमांड के फैक्टर्स ये एमआरपी है ना, दिस इज एमआरपी। इफ यू रिमेंबर, एमआरपी इज इक्वल्स टू मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट इनटू एमआर। तो बेसिकली अगर प्रोडक्टिविटी राइजेस और इफ द प्राइस ऑफ द गुड राइजेस, द डिमांड कर्व कैन एक्चुअली शिफ्ट, एंड व्हेन डिमांड कर्व शिफ्ट, based on that, the number of the wage that you are going to be paying will change. Okay? उसी तरह से सप्लाई के आपके पास कुछ रीजंस होते हैं जिसके अंदर आप मोबिलिटी की बात करते हैं, लेबर मोबिलिटी है कि नहीं है, या अच्छे नेट एडवांटेजेस हैं कि नहीं है टूवर्ड्स दिस इंडस्ट्री। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपके सप्लाई को कर्व को भी अफेक्ट कर सकते हैं, विच कैन ऑल्सो देन हैव एन अफेक्ट on the wage rate. In fact, I would say कि even elasticity can have an impact on कि इनका ये जो कंपेटिटिव मार्केट में वेज है और जो मोनोप्सनी में वेज है, इसके अंदर सप्लाई अगर मैं बहुत इलास्टिक बना दूं तो व्हाट विल हैपन इज कि वेज डिफरेंशियल ज्यादा नहीं होगा। ये सप्लाई का इस तरह से बनता, ठीक है, इसका एमसी कुछ इस तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा होता, तो जो क्वांटिटी होती परफेक्ट, सॉरी, जो कंपेटिटिव वेज रेट है, और ये अगर इलास्टिक होता तो डब्ल्यू एम भी जो है वो बहुत क्लोज होता। तो दैट वुड हैव बीन वन ऑफ दोज थिंग्स आल्सो जो हम कह सकते हैं कि वुड हैव हैड एन इफेक्ट। तो फिर मैं इसके हाउएवर की असम्पशन के ऊपर जाता हूँ। हाउएवर, विल इट ऑलवेज बी द केस? वन फैक्टर इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन। In monopsony markets, government may impose a minimum wage above the monopsony wage. If set correctly, this could raise wage without causing unemployment. ये मैं पूरी बात समझा देता हूँ, गौर से सुनो। I've done this a few times in the past also, but kids still struggle with it. I'll do it through almost like two diagrams, because at the end of the day, what I'm trying to explain over here is कि जब मिनिमम वेज गवर्नमेंट सेट करती है या ट्रेड यूनियन, लेट्स अस्यूम बोथ टू बी द सेम, ठीक है। इनफैक्ट आई थिंक आई माइट हैव टू डू थ्री डायग्राम। ओके, एक सिनेरियो में कह रहा हूं कि गवर्नमेंट जो अपना मिनिमम वेज है, जो वेज रेट है, वो लगाती है इधर, ठीक है, ऑन माय फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी ये मिनिमम वेज या ट्रेड यूनियन ने, दिस इज व्हाट देव नेगोशिएटेड। दे हैव नेगोशिएटेड अबव WM, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन या नेशनल मिनिमम वेज इस केस के अंदर, तो ट्रेड यूनियन के आने की वजह से हुआ ये है कि अभी भी आप, इवन आफ्टर ट्रेड यूनियन कमिंग इन, आप कंपेटिटिव मार्केट से नीचे हो वेज के टर्म्स में, राइट, लेकिन मोनोप्सनी से ज्यादा वेज हो गई है। और हायरिंग भी जो है, हायरिंग इज ओवर हियर। एक स्टेप स्किप कर रहा हूं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि दिस इज द नंबर ऑफ पीपल दैट विल बी हायर्ड। तो हायरिंग उससे जो है, कंपेटिटिव मार्केट से जो है, कंपेटिटिव मार्केट से जो है एटलीस्ट हायरिंग कम है और मोनोप्सनी से ज्यादा है। दे नॉट इवन एक्चुअली आस्किंग अबाउट हायरिंग, दे मोर इंटरेस्टेड इन द वेज। ये भी सिनेरियो हो सकता है दैट द गवर्नमेंट माइट सेट द वेज रेट ओवर हियर। इफ दे डू दिस, तो अब मैं कह सकता हूं कि यूनियन की वजह से या मिनिमम वेज की वजह से मार्केट का जो वेज रेट है और जो हायरिंग है वो कंपेटिटिव मार्केट के बराबर भी हो सकती है। आई एम जस्ट मेकिंग एन एवेल्युएटिव स्टेटमेंट। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि अगर ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेड यूनियन है तो दे माइट इवन गो अबव द वेज रेट। ओके, they can go above the wage rate
of uh, the competitive market, बट उस केस के अंदर जो हायरिंग है वो QM वाली हायरिंग ही होगी. दिस इज द हायरिंग दैट बिकॉज MRP इज इक्वल टू MC की कंडीशन इधर है, but the wage rate is above, कंपटीशन से ऊपर चली गई. यू सी दैट. तो ये मेरी एक एक्सप्लेनेशन हो सकती है, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू एक्सप्लेन ओवर हियर कि इन सम केसेस it is possible that the wage rate can be above the government or the union can actually get a wage rate above the competitive मार्केट सिचुएशन. नीचे मैंने फिर ट्रेड यूनियन के साथ वही बात की हुई है. फिर इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज another consideration. In a perfectly competitive market, high wage might attract a large inflow of workers, increasing competition and pushes the wages down. Conversely, in monopoly markets, if labor is inelastic due to immobilities, wages might remain relatively stable despite increased demand. So we're just suggesting a few things. नीचे फिर और भी कुछ हमने suggestions दिए हुए हैं. This is all from the marking scheme, the suggestions that they've made. Like for example, how easily can you substitute labor with capital? The more substitutability you have, the lower wage you can actually pay. Right? So इस तरीके से हमारी बात है. And lastly, my conclusion. Conclusion क्या है भाई? In conclusion, while the monopsony model predicts lower wages than perfect competition due to employers' wage setting power, the statement use of always is too absolute. That means, देखो ये always वाले को तो आप हमेशा ही defer करते हो. In the real world, wage outcomes are influenced by a range of factors, including the government policies, the union presence. Government policy में national minimum wage की बात हो रही है, markets में imperfection, capital substitution. There are too many. Just do too many and you're good. There are plausible scenarios where monopsony wages may be equal to or even exceeds those in competitive markets, right? So therefore, theoretically, this is not an accurate statement. Okay? So it depends. It depends on many things. So lengthy essay, but that's how you're supposed to write for it. Okay, जी. Moving on. आगे बढ़ते हैं. मैक्रो के अंदर जब हम आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा थके हुए होंगे. एग्जाम के अंदर भी ना 2 मार्क का है, 22 घंटे का है. यू विल बी इन ऑलमोस्ट लाइक, probably I would hope कि ये you won't exceed, but you will be in like 40 about 80 minutes, right? So that's an hour and a 20 minutes, and you'll be left with 40 minutes, right? Hopefully, but chances are you'll be left with only 30 minutes. So that's what happens. Central banks can control the money supply. An increase in money supply will cause inflation. Therefore, central banks can control inflation. There are three things which they're talking about. Evaluate this statement. Central banks can control money supply. How would I write this essay? First, what do I mean by money supply? What is money supply? I want to talk in terms of that narrow money, broad money के terms के अंदर. ठीक है? How can you control the money supply? Well, you can do quantitative easing. You can do open market operations. I've talked about this. I'll explain it in a bit while doing the essay, right? So you can control it. You can control it through interest rate. You know that how if you increase the interest rate, what happens as a result of that? So here's the hot money comes in, international flows happen, right? People save, they don't consume, they put the money in the banks, right? So there are a lot of things that can be talked about here. So level one के अंदर, this is what I'm looking at. Here, an increase in the money supply will cause inflation. So I want to talk about how this is going to happen. इसके अंदर आपका बहुत ही सिंपल सा वो बेसिक ADAS वाला मॉडल मुझे तो नजर आ रहा है, बिकॉज एग्रीगेट एक्सपेंडिचर वाला मॉडल विद मल्टीप्लायर आई डोंट सी फिट, बिकॉज इन्फ्लेशन के साथ कनेक्शन बनाना है. तो ADAS डायग्राम का वाई एक्सिस पे ही प्राइस लेवल है और इन्फ्लेशन मेजर होती है, राइट?
So I would like to prove that how that can actually cause inflation. And then for level three, therefore, central banks can control inflation. So here, what policies might be needed for the central bank to control inflation? Obviously, we're looking at contractionary policy. एंड देन ये लेवल थ्री हो गया तुम्हारा आंसर और फिर तुमने इसका काउंटर आर्ग्यूमेंट करना है दैट central bank may not always be able to control inflation through the monetary policy. They may use the supply side policy or the the fiscal policy, and uske advantages certain I can explain also. Right, so this is how I will go about the question. Probably this is what the examiners have also sort of suggested. So again, let's go over the essay a bit. So Felici, oh, I did not say कि inflation को define करना चाहिए. I think inflation को define करना चाहिए for a mark at least. So important bit. First thing, inflation is defined as a sustained general rise in the price level of goods and service. A second, please. I think there's a slide over here. Oh, all right. तो इन्फ्लेशन आपने एक्सप्लेन किया और एक साथ में एक स्टेटमेंट भी डाल दी कि इन्फ्लेशन की वजह से जो है परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है वो गिरती है अच्छी बात है सीपीआई मेजर होता है सीपीआई से मेजर होता है इन्फ्लेशन चलो कोई मसला नहीं है सेंट्रल बैंक का काम है पैसे को प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना और मॉनेटरी पॉलिसी को यूज करेगी दिस जस्ट स्टार्टिंग इट डजंट मीन मच मेन चीज पे आ जाओ मनी सप्लाई क्या होता है हमने पहले भी बोला मनी सप्लाई इज लाइक द टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी नॉट जस्ट सर्कुलेशन बट इन द इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इस सर्कुलेशन के अंदर जो मनी सप्लाई है उसमें सर्कुलेशन एंड बैंक डिपॉजिट्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस ओके सेंट्रल बैंक के पास इंटरेस्ट रेट का भी एक टूल है ओपन मार्केट का है और क्वांटिटेटिव ईजिंग का भी एक कॉन्सेप्ट है वी टॉक्ड अबाउट दिस प्लीज गो इनटू द लेक्चर्स एंड डू सी व्हाट दे आर one of the way is by adjusting interest rates because interest rate से cost of borrowing पे effect होता है उससे लोगों की saving पे effect होता है तो if the central bank raises the interest rate the borrowing becomes expensive which encourages spending and investment right? Which discourages sorry my bad spending and investment therefore reducing aggregate demand and may control inflation ठीक है हो गया ये तो इसका उन्होंने बता दिया कि हाउ मनी सप्लाई कैन हैव एन इम्पैक्ट फिर उसके बाद अनदर टूल इज ओपन मार्केट ऑपरेशंस यू नो व्हाट दिस इज जिसके अंदर सेंट्रल बैंक आती है और गवर्नमेंट के बॉन्ड्स जो है वो बाय और सेल करती है मार्केट के अंदर और उससे क्या होता है जब वो सेंट्रल बैंक आके मार्केट के पास आती है तुम लोगों के पास आती है मिस्टर कुमैल के पास आती है और कहती है ये जो आपके पास गवर्नमेंट का बॉन्ड है जो आपने खरीदा हुआ है गवर्नमेंट को जो पैसे दिए हैं आपने और ये बॉन्ड खरीदा है ये बॉन्ड आप हमें दे दें हम आपको इसके बदले में पैसे दे देते हैं तो अब जो है कुमैल एंड द इकोनॉमी हैज मोर मनी राइट सो उससे मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है ठीक है तो इसकी वजह से ये होगा फिर उसके बाद जो ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग है ना क्वांटिटेटिव ईजिंग इज अ मोर मॉडर्न पॉलिसी वेयर द सेंट्रल बैंक क्रिएट्स न्यू मनी इलेक्ट्रॉनिकली टू परचेज द फाइनेंशियल एसेट तो फर्क क्या हुआ कि इसके अंदर बेसिकली सेंट्रल बैंक इज यूजिंग द मनी विच इज विच दे हैव ऑफ मे बी द बैंक ने जो रखाया हुआ है लेकिन क्वांटिटेटिव ईजिंग के अंदर जो है वो बेसिकली दे आर प्रिंटिंग न्यू मनी एंड दे आर बेसिकली इंक्रीजिंग इन द इकोनॉमी आइडिया वही है सेम गोज टू मिस्टर कुमैल and prints money and gives it to them and take the bond out from their hands basically तो इससे मनी सप्लाई इंक्रीज होता है
अब यहाँ पे इंटरेस्टिंगली अगर तुमको याद हो, क्वांटिटेटिव थ्योरी इज पार्ट ऑफ योर, सॉरी, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज पार्ट ऑफ योर कोर्स। तो यहाँ पे हमने एक सजेशन दिया है कि यू कैन राइट अबाउट दिस, नॉट नेसेसरी, बट यू कैन राइट अबाउट दिस। आई डोंट नो ये मार्किंग स्कीम में है कि नहीं है, आई जस्ट चेक इन अ बिट। उसमें अगर तुमको याद हो, क्वांटिट क्लासिकल व्यू यानी न्यू मॉनेटरी के हिसाब से उन्होंने कहा कि जी हम दो चीजों को अस्यूम करते हैं टू बी फिक्स्ड, कांस्टेंट, which is the velocity and the output, because LRAS न्यू क्लासिकल के हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू देम यू इंक्रीज द मनी सप्लाई एंड इट विल डायरेक्टली इफेक्ट द प्राइसेस, राइट। सो मिल्टन फ्रीडमैन इज वन ऑफ देयर इकोनॉमिस्ट जिसने ये बात भी की है कि inflation is always and everywhere a monetary phenomenon. You increase the money supply and it will have a direct impact on the prices in the long run. Okay? फिर आपने जब ये सारी बातें कर ली, लेट मी सी कि ये मार्किंग स्कीम के अंदर क्वांटिटी थ्योरी की बात की है इन्होंने कि नहीं की है। आई डोंट सी, दे हैवंट टॉक्ड अबाउट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, राइट, बट इट्स अ वैलिड थिंग दैट यू कैन टॉक अबाउट। फिर आप इवैल्यूएशन की तरफ जाते हैं कि क्या ये होगा। However, in reality, this relationship is not always so straightforward. Firstly, the money supply is difficult to define and measure precisely कि इकोनॉमी में कितना पैसा है सर्कुलेशन में। That's very hard to quantify because there's always like पैसा छुप भी जाता है, ब्लैक मार्केट में भी चला जाता है, right? Economists often use different versions of money, such as M0 for narrow and M4 for broad money, but these do not capture all forms of money like assets, especially in modern economies. जैसे आपके पास ये बिटकॉइन आ गया, ये जो क्रिप्टोज में लोग काम कर रहे हैं, स्टेबल कॉइन्स में काम कर रहे हैं, गोल्ड टाइप का एसेट खरीद लेते हैं। नाउ दैट इज नॉट पार्ट ऑफ दिस मनी सप्लाई, राइट, बट इट हैज बीन बॉट बाय द योर मनी सप्लाई। Secondly, the link between the money supply and inflation can be weak or delayed. I'm basically making a fiscal, sorry, Keynesian's के point of view से I'm making an argument that, you know what, कोई सीन नहीं है money supply का और inflation की controlling का. After the 2008 global financial crisis, I think you're well aware, I've explained this, central banks significantly expanded the money supply through quantitative easing. Okay. However, inflation remained low for many years, right? Why was that happening? Because people were, even if they got extra money, they chose to save the money rather than spend because they knew कि हालात tight है, so it might not work. Moreover, inflation can also be caused by supply side factors, ओके, नॉट जस्ट डिमांड। अब हो ये रहा है कि एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट हो गया जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हुई भी है। अब तुम वहां आके उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो थ्रू द डिमांड पॉलिसी, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर जो है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट का जो है कुछ ज्यादा कुछ इफेक्ट आएगा नहीं। So, for example, cost push inflation can result from rising oil prices and higher wages or supply chain disruption. In these cases, reducing the money supply or raising the interest rate will not address the root cause and might even worsen the situation by reducing output. अगर तुम अपना ADAS डायग्राम बना लो ना, तो ये बात तुमको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि अगर इकोनॉमी के अंदर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है because of aggregate supply shifting to the left, और इसको तुमने टैकल कर दिया बाय रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, तो prices may not fall, but what's going to happen is your economic growth is really going to take a hit and your employment is going to take a double hit, and that's really bad, right? So it might not be able to manage the situation. Additionally, interest rate may not always influence behavior as expected. In a deep recession, even very low interest rate may not encourage businesses कि आए और काम करें, because लोग का वो जो situation है ना, liquidity trap, the interest rate has gone so low that people are like कि नहीं यार मैं cash के साथ ही खुश हूँ, I don't want to buy financial assets and you know invest or anything. So that could be one of those things. So we've suggested quite a few things over here.
in these essays. Again, I'm not saying that you want to write every single thing, but in conclusion के ऊपर आ जाते हैं. In conclusion, although central banks do have significant tools to influence the money supply and through it aggregate demand and inflation to control, uh, their control is not absolute. The effectiveness of these tools depends on people, institutions, and how they respond. How people respond to rising interest rates, on the underlying causes of inflation, and on other factors like confidence, external shocks, fiscal policy. Therefore, while central bank can influence inflation by managing money supply, they cannot always fully control it. Do you understand? So this statement is partly correct. This is how you're going to write this, right? It's a lengthy essay. Again, ऑनेस्टली इसमें से 15-16 मार्क्स उठाना कोई बड़ी डील नहीं है. ऑलमोस्ट एएस लेवल का टाइप का आंसर लिखो. बी स्मार्ट अबाउट इट. ऑल यू हैव टू डू इज answer every bit of the question. You do that, you qualify for a level 3. That's all you want to do. You want to get somewhere near 11 marks at least. Level 3 allows you to do that because you've answered everything little, little. Okay? फिर उसके बाद इवैल्यूएशन, क्योंकि आपने थोड़ा बहुत तो लिखा ही है और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी सब चीज़ें की हैं, लेवल 3 पे आ गए हो, तो फिर ऑब्वियसली इवैल्यूएशन के भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स मिल ही जाएंगे इफ यू डू इट करेक्टली. लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट, कुछ याद कर लो फिजिकल मॉनेटरी सप्लाई साइड पॉलिसीज की जो जेनेरिक लिमिटेशंस हैं, वो याद कर लो एंड हमारे मसले बहुत बेहतर हो जाएंगे. ऑलराइट, let me do deal with the last questions. I've told you, देखो जी मेरे जो नोट्स हैं उसके अंदर जो लास्ट चैप्टर है, या लास्ट चैप्टर कह रहा हूँ, जो लास्ट 50 पेजेस है, that is fundamental. You perfect yourself in those last 50-60 pages. I think 50 है कि 60 हैं, but you can go and you can see those. Those are fundamental ones, right? तो जरा बात करते हैं कि क्वेश्चन क्या है. Again, some high income countries, देखो, there is a reason why they mention these things: high income countries, low income countries, right? So some high income countries have introduced high tariffs on some imports to reduce the negative effects of globalization on their economies. I want to explain a few things here. Terminologies: globalization, tariffs, high income countries. I want to explain that. फिर high tariffs किस तरह से ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इफेक्ट. तो ग्लोबलाइजेशन के आई वांट टू टॉक अबाउट बोथ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव इफेक्ट, राइट? And then किस तरह से tariff. I think this just resembles so much to what is happening right now, right? Somehow it seems as if they predicted this. So I don't know how the essay is for this one, but let's take a look at it for a second. Uh, आ जाइए, लेट्स सी. पहले तो आपने बात करनी है ग्लोबलाइजेशन के बारे में. रटे मार लो, ग्लोबलाइजेशन क्या है. ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज अबाउट द इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड. व्हाट काइंड ऑफ इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन: easy flow of goods and services, easy flow of capital, easy flow of technology, easy flow of labor. Okay, how is this achieved? It's not mentioned over here, but I would like to mention this. The backbone of this is basically better communication and transportation. Okay, these two things are, and obviously the free trade. This is the backbone of globalization. Now, globalization सिर्फ, हम तो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो इसीलिए हम गुड्स एंड सर्विसेज एंड लेबर टेक्नोलॉजी इन चीज़ों की बात करते हैं. Otherwise, globalization happens in terms of the social or culture of the countries also. जैसे हम बहुत integrated हैं Western economies और उसके culture से, through the TV shows and all of that, and we know their psychology much better than they know our psychology. Why? Because we are influenced by their culture. ठीक है जी.
तो फिर वो फर्दर फिर बात करते हैं, while globalization brings numerous benefits like efficiency, wider markets, economies of scale, but it also brings a lot of negative effects for high income countries. क्या चाइना से सारे प्रोडक्ट्स बन बन के कंट्री के अंदर आ रहे हैं? नाउ यू आर हेविली रिलायंट, local factories are not able to compete, so you have rising unemployment in domestic industries जो कि compete नहीं कर सक रही हैं, और import बहुत ज्यादा है। उसकी वजह से income inequality का problem आ सकता है। There's the loss of culture and economic autonomy. You don't have control over your own economy, and we can see this happening right now, and we've talked about it also, at least those who are coming to classes. So as a result, some high income countries have responded by imposing selective tariffs on goods. Before I go over there, like I said, I want to talk about high income countries की कुछ मुझे characteristics बताओ. It's a must thing that should be there in your essay. अगर लो के बारे में बात करें तो make sure कि तुम लो के हिसाब से फिर बताओ. For example, high income economies have high GDP per capita. They are more productive, they are more industrialized, they have more free market and reliance on international trade, right? Their workers are more skilled and educated. However, they may face stiff competition from low income countries with lower labor costs. For example, आप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर देख ही सकते हैं, that's why most of the businesses are going overseas. और उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम यू सी is a structural problem taking place, structural unemployment. आपका जो लो स्किल्ड वर्कर है उसको नौकरियां नहीं मिलती। फिर आपने एक टैरिफ को समझाना है। टैरिफ एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एक हिस्सा है। टैरिफ की वजह से क्या होता है? वी वुड लाइक यू टू मेक द डायग्राम। हैव दे आस्क्ड फॉर द डायग्राम? With the help of a diagram, of course they have asked for a diagram. So you make the tariff wala diagram which you made in AS. Remember that. Don't make any other silly easy one. This is the one that we want. So you place quantity, you place price, domestic demand, domestic supply, world price. और इसके ऊपर जब हमारा टैरिफ लगेगा तो टैरिफ लगने की वजह से ये जो SW है ये ऊपर की तरफ जंप करेगा, राइट? सो PW प्लस T की तरफ। और ये टैरिफ लगने की वजह से जो ओरिजिनल आपके इंपोर्ट्स थे, दिस इज व्हाट द ओरिजिनल इंपोर्ट्स हुआ। और अब जो है आपके जो इंपोर्ट्स हैं वो गिर के Q3 से Q4 पे आ गए हैं। एंड जहाँ तक कंज्यूमर की बात है, जो कंज्यूमर का सरप्लस एरिया था ओरिजिनली एट वर्ल्ड प्राइसेस फ्री ट्रेड के केस के अंदर, वो आपका कंज्यूमर सरप्लस वाज दिस एरिया। लेकिन टैरिफ लगने की वजह से अब आपका जो सरप्लस एरिया है वो चेंज हो जाता है और वो गिर जाता है, बिकॉज प्राइसेस हैव गॉन अप, और वो गिर जाता है बाय दिस एरिया राइट हियर, जिसके अंदर वी कैन मेंशन कि जो एरिया 1 है वो प्रोड्यूसर को जाता है, एरिया 3 जो है वो गवर्नमेंट को चला जाता है, और एरिया 2 और 4 जो है वो प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर के नुकसान में चले जाते हैं। राइट, सो वी टॉक्ड अबाउट दिस ऑल्सो। फिर आपने डायग्राम को पूरा एक्सप्लेनेशन दिया कि किस तरीके से टैरिफ लगाने की वजह से जो आपका कंज्यूमर है वो लूज कर रहा है, जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो गेन कर रहा है। Additionally, the government may use extra revenue to support long-term growth policies, for example, investing in education and infrastructure. From an analytical perspective, tariffs can help high-income countries slow down the adverse effect of globalization. Protecting certain industries temporarily may allow them to adjust the restructure. So, for example, अगर आप कहते हैं कि जी मैं आप पे टैरिफ लगाने जा रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं आहिस्ता आहिस्ता से वो टैक्स बढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने रिसोर्सेज को डाइवर्ट कर लो टुवर्ड्स वट एवर यूर गुड एट, alright? Or invest in innovation and things like that. Because when I remove this tariff, then obviously you won't be able to compete.
फिर हम इसमें ये भी एएस में, अगर तुमको याद हो, तो हमने बात की थी कि कुछ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स होते हैं जहां पे आप टैरिफ लगा के उनको प्रोटेक्ट करते हो डंपिंग से या अनफेयर फॉरेन कंपटीशन से। देन ऑब्वियसली यू मेक अ काउंटर आर्ग्यूमेंट फॉर इवैल्यूएशन के टैरिफ के लगाने की वजह से there is a significant economic cost and inefficiency that you are promoting, especially allocative efficiency से आप हट जाते हैं। You no longer prices reflect comparative advantage. There's higher prices, fewer choices, loss of welfare loss 2 और 4 जो मैंने अपने डायग्राम में बनाया है। You can shade that in the diagram. I've done that. And so that's the problem. फिर tariff की वजह से there can be retaliation and you can move into a trade war. Trade war से आपका export भी hurt हो जाएगा। तो जो आप हाई इनकम कंट्री जो एक्सपोर्ट कर रही थी, तो अब वो एक्सपोर्ट भी गिर गया, आपकी नेशनल इनकम गिर गई, एम्प्लॉयमेंट गिर गई, एंड देन इट ब्रिंग्स इवन फर्दर प्रॉब्लम। Furthermore, long-term consequences may outweigh the short-term benefits, right? Protecting uncompetitive domestic firms may delay unnecessary structural adjustments, such as shifting resources into high value industries. This slow innovation and productivity growth. So, and your final conclusion with this, then, कि टैरिफ हाई इनकम कंट्रीज के अंदर ग्लोबलाइजेशन के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको कम करने में बिल्कुल काम कर सकती है। ठीक है, उससे आप अपनी प्रोटेक्ट कर सकते हैं डोमेस्टिक फर्म्स को, एम्प्लॉयमेंट को, जीडीपी को। लेकिन लॉन्ग रन के अंदर आप इनएफिशिएंसीज को प्रमोट कर रहे हैं बाय चार्जिंग टैक्स लगा के। आप एफिशिएंट फर्म्स को कह रहे हैं कि यू नो व्हाट, वी आर पनिशिंग यू, राइट? हमने ज़बरदस्ती प्राइस बढ़ा दी है, अब आप अपने लो प्राइस का हमारे मुल्क में नहीं बेच सकते, सो देयरफॉर सॉरी, दिस मार्केट इज क्लोज्ड फॉर यू और लिमिटेड फॉर यू। तो अब आप स्पेशलाइज भी नहीं कर सकते बिकॉज आपका वॉल्यूम गेट्स अफेक्टेड। So obviously there are a lot of bad to it. Then there is always potential for retaliation, right? And there is a loss of consumer surplus and all of these things are happening. So tariffs जो हैं, they will, let me go back to the question 1 second, कि क्या करना है? Have introduced high tariffs to reduce the effect. Oh, so evaluate. All right. They're not saying anything it will always help or anything. So from my evaluative point of view, um, tariffs can have a lot more positive effect, but at the same time, it can have long run negative implications. तो उससे हमारा फिर ये बेसिकली कॉन्सेप्ट जो है ये कंक्लूड होता है। एंड दिस इज व्हाट यू हैव टू डू इन दिस पेपर। A very simple paper in my opinion, but again, आदत डालो राइट अप करने की। यू आर एक्सपेक्टेड टू राइट अ लॉट। ठीक हो गया? विल स्टॉप हियर फॉर द डे एंड आई विल सी यू इन